Hello students, today I will explain you the last topic of this chapter, guarantee of profit to a partners. And the next important topic is guarantee of profit to a partners. Sometimes a partner is guaranteed that he shall get a certain minimum amount of profit of the firm, and such a guarantee may be given either by any of the partner or by all the partners in the particular ratio. When the profit of the firm are not adequate, then the excess paid to the guaranteed partner should be charged to the partner who has given the guarantee. And the first point is guarantee of profit by partners to firm. It means जब partners firm को guarantee देते हैं. Okay, and the next is guarantee of profit by firm to partners. It means एक partners को remaining partners जब guarantee देते हैं, it is known as guarantee of profit by firm to partners. And the third point is guarantee of profit by individual partners to other partners. For example, there are three partners A, B, C. जब A C को guarantee देगा, okay, तो this is known as of profit by individual partners to other partners. So these are the 3 points relating to guarantee of profit to a partner. So let us take an example. Guarantee of profit to a partners, and here is first is guarantee of profit by partners to firm. For example, A, B and C, they are partners. फर्म का प्रॉफिट कितना होगा 15 लाख, बट पार्टनर्स ने क्या फर्म को प्रॉमिस किया कि इस बार जो प्रॉफिट है वो कितना होगा 18 लाख. इट मीन्स 3 लाख मोर बियर बाय द पार्टनर. तो दिस इज नोन एज गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय पार्टनर्स टू फर्म. एंड द सेकेंड इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय फर्म टू पार्टनर्स. फॉर एग्जाम्पल ए बी सी दे आर पार्टनर्स. सी का जो शेयर है प्रॉफिट का वो कितना है 40,000, बट ए और बी ने गारंटी दी कि सी तुम्हारा जो शेयर है वो कितना होगा 80,000. इट मीन्स 40,000 विल बी बियर बाय द रिमेनिंग पार्टनर. ओके, तो दिस इज नोन एज गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय फर्म टू पार्टनर्स. ओके, द थर्ड इज guarantee of profit by individual partners to other partner. For example, A का प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 40,000, बट A ने कहा कि इस बार तुम्हारा जो शेयर है C वो कितना होगा 60,000. इट मीन्स दिस इज नोन एज गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय इंडिविजुअल पार्टनर्स टू अदर पार्टनर्स. तो 20,000 कौन बियर करेगा A. ओके, दीज आर द 3 केसेस. Here is illustration given in your book. There are 3 partners A, B, C, and their profit sharing ratio is 5:4:1, and C is given a guarantee that his share of profit is given year would be 5,000, and deficiency, if any, it would be borne by the remaining partner. It means A and B equally. The profit for the year ending 31st March 2016 is 40,000. You have to pass the necessary journal entries. First of all, you have to calculate profit. Okay, तो profit कितना है आपका? First of all, here is 40,000. 40,000 is your profit. First of all, you have to distribute these profit in the partner A, B, C in their profit sharing ratio 5:4:1. So 40,000 into 5/10, it's 20,000. It means share of A 20,000. Here is same B, 40,000 into 4/10, it's 16,000, and C share it's 4,000. But in question has given here is the C share is would be 5,000. Okay, but here is 4,000. It means 1,000. It is less, so 1,000 deficiency borne by the A and B equally, 1:1. So first of all, you pass the necessary journal entry. Here is the first entry. First of all, your profit will be transferred to appropriations account. Okay, ये जो profit है, these 40,000 profit will be transferred to appropriations account. So your journal entry will be profit and loss account debit 40,000 to profit and loss appropriation account, because appropriations account में आप credit करोगे. Here is 40,000, the transfer of profit. The second entry, these appropriations, it means profit divide among the partners A, B, C in their profit sharing ratio 5:4:1.
ओके, हियर यू कैन डिवाइड. इट मीन्स प्रॉफिट एंड कितना था आपका 40,000, तो ए का शेयर कितना आएगा, हेयर इज 20,000 था, बट 1,000 की जो डेफिशिएंसी है सी की, वो कौन बियर करेगा, ए एंड बी. इट मीन्स 500 आप 20,000 में से माइनस कर दोगे, तो 20,000 में से 500 माइनस करोगे, द रिमेनिंग अमाउंट विल बी 19,500. सेम बी का शेयर आपका कितना था 16,000. 16,000 माइनस 500, द रिमेनिंग अमाउंट इंटू 15,500. एंड द सी शेयर आपने कितने की गारंटी की थी 5,000, तो सी को कितने से क्रेडिट करोगे 5,000. ओके, now last you have to prepare profit and loss appropriations account. So first of all, profit will be transferred to appropriations account in credit side 40,000, and here to A capital total 20,000, but transfer to C की है 500, तो शेयर ऑफ ए कितना हो जाएगा 19,500. एज इट इज़ टू बी कैपिटल, बी का प्रॉफिट था 16,000 और उसने ट्रांसफर टू सी 500, तो रिमेनिंग अमाउंट 15,500. एंड द सी शेयर टोटल इज 4,000, तो 1,000 बॉन्ड बाय द ए एंड बी, 500 500, इट मीन्स 5,000. तो दिस इज योर 40,000 debit and this is your credit. Clear? Next illustration has given in your book Moli, Bhola and Raj. They were partner in a firm and their profit sharing ratio is 3:3:4. And these are adjustment has given IOC 5% per annum, IOD 12% per annum, interest on partner loans 6% per annum. Moli was allowed an annual salary 4,000. Bhola was allowed a commission 10% on net profit as shown in the profit and loss account, and Raj was guaranteed a profit of 1,50,000 after making all the adjustment as provided in the partnership agreement. The fixed capital, it means partner have a fixed capital, तो आपकी जितनी भी adjustment है वो कहाँ होगी, current account में. You have to open current account. Capital 5 lakh Moli, Bhola 8 lakh and Raj 4 lakh. On 1st April 2016, Bhola extended a loan on 1 lakh to the firm. Okay, Bhola ने firm को कितना loan दिया है 1 lakh. The net profit of the firm from the year ending before interest on Bhola loan, that's more important, before interest on Bhola loan was 3,06,000. Prepare profit and loss appropriations account of all the partners for the year ending 31st March, and also you have to prepare current account. Okay, so first of all you have to calculate, you have to open profit and loss appropriation account. So first your profit has given 3,06,000. Here is given 3,06,000, and you have to pay Bhola loan on interest, because this is charge against profit, you have to pay it. That's why first of all you have to calculate here interest on loan. This is 1 lakh, amount has given 1 lakh. Bhola extended a loan of 1 lakh to the firm. It means Bhola ने firm को कितना loan दिया है 1 lakh, तो you have to calculate, और loan की आपको कितना दे रखा है 6% per annum. So you have to calculate interest on loan 1 lakh into 6%, that is 6,000. It means interest on loan 6,000 you have to pay to Bhola. Here is, तो profit कितना है आपका 3,06,000 minus 6,000 interest on loan, so the remaining amount, it means 3 lakh. So 3 lakh is your profit, will be transferred to profit and loss appropriations account. The next you have to calculate IOC. Here IOC has given 5%. Here is IOC has given 5% per annum. You have to calculate on their capital. Here is capital is given Moli 5 lakh. So 5 lakh का 5% is 25,000. Here is Bhola 8 lakh. 8 lakh का 5% is 40,000. You have to write Bhola current account because partner have a fixed capital. So you have to open current account. And last but not least, Raj 4 lakh. 4 lakh का 5% is 20,000. So IOC is total amount you have to write 85,000. Okay, the next salary.
सैलरी आपको कितना लिखा है यहाँ पे 4000 एनुअल, तो मोली करंट अकाउंट 4000. द नेक्स्ट इज कमीशन. कमीशन आपको चार्ज करना है, कमीशन ऑन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट. हियर इज नेट प्रॉफिट हैज़ गिवन 3 लाख, तो 3 लाख का 10% इज आपका कितना आ जाएगा, इट्स 30,000. ओके. द नेक्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? हियर इज हैव गिवन इन योर क्वेश्चन that Bhola withdrawal 5,000 at the end of the each month and Molly withdrawal 10,000 at the end of each quarter and Raj withdrawal 40,000 at the end of each half year. It means after 6 months. Okay, so first of all we have to calculate Molly. Molly withdrawal 10,000 at the end of each quarter. Each quarter है तो it means पूरे साल में आपने 4 बार withdrawal करे, तो 10,000 into 4. The total amount is 40,000. You have to withdraw 40,000 into, here is IUD. IUD कितना है 12% per annum. तो 40,000 into 12 divided by 100 into, you have to calculate average period. Average period कैसे calculate करोगे? Molly withdrawal at the end of each quarter. It means each quarter के बाद, it means अगर आपने 3 मंथ्स के बाद विड्रॉल करा है तो बाकी कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा? 9 मंथ्स. ठीक है, फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद प्लस, और आज जब आप लास्ट के 3 मंथ्स के बाद विड्रॉल करोगे तो इंटरेस्ट क्या लगेगा? क्योंकि आपने एंड में विड्रॉल करा है तो इंटरेस्ट 0 होगा, डिवाइडेड बाय 2. इट मीन्स डिवाइडेड बाय 2, तो आपका एवरेज पीरियड कितना आ रहा है? 4.5 मंथ्स. तो 4.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, इट्स 1800. When you calculate average period कैसे कैलकुलेट करोगे? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2. तो 4.5 एवरेज पीरियड आएगा डिवाइडेड बाय 12. तो योर टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 1800. ओके. द नेक्स्ट भोला. हियर इज गिवन Bhola withdrawal 5,000 at the end of each month. At the end of each month, तो टोटल कितना आएगा? 5,000 into 12, it's 60,000. 60,000 into interest on drawing कितना है? 12% per annum. Same you have to calculate average period. Average period आप कैसे कैलकुलेट करोगे? भोला ने विड्रॉल करा है at the end of each month. Each month, तो जब फर्स्ट ड्राइंग वो करेगा तो बाकी कितने मंथ्स का टाइम पीरियड बच जाएगा? 11 मंथ. और लास्ट में कितना रहेगा? 0. ठीक है. टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2. तो इट्स 5.5. दिस इज योर एवरेज पीरियड. तो 60,000 into 12% divided by 100 into 5.5 months divided by 12, it's 3,300 is your IOC. As it is, you have to calculate the amount of Raj withdrawal 40,000 at the end of half year. तो 40,000 सिर्फ विड्रॉल कर रहे हैं, 12% रेट ऑफ रिटर्न, एंड आफ्टर 6 मंथ, so you have to calculate 6 month interest. 6 divided by 12 is 2,400. This is your IOC. So you have to calculate interest on drawing, because interest on drawing क्या है? कंपनी के लिए क्या है? उसके लिए इनकम. That's why you have to write in credit side. Molly current account 1,800, Bhola current account 3,300, and Raj current account it's 2,400. अब योर प्रॉफिट इज़ 3 लाख, बट 3 लाख में ये जो एडजस्टमेंट है आपकी IOC, IOD, ठीक है, ये कमीशन, सैलरी, इनकी एडजस्टमेंट नहीं हुई है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी एडजस्टमेंट करोगे. तो कैसे एडजस्टमेंट करोगे? आपका टोटल नेट प्रॉफिट कितना है? 3 लाख. इसमें आप एडजस्टमेंट करोगे, ऐड करोगे 7,500. दिस इज़ योर IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. फिर आप इसमें से माइनस करोगे. दिस इज़ योर एक्सपेंस यू हैव टू पे. योर पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस 85,000. फिर यू हैव टू पे सैलरी माइनस 4,000. देन यू Bhola commission is 30,000 you have to pay. Then you have to deduct these amount and add 7,500. Your remaining amount will be, here is given, 3 lakh is your profit plus interest on drawings
minus interest on capital, salary, commission, and the remaining amount is your net profit will be 1,88,500. Now these 1,88,500 will be divided among the partner Molly, Bhola and Raj in their ratio 3:3:4. Okay, and Molly का जब आप calculate करोगे it's 56,550, Bhola 56,550 and Raj 75,400. But minimum guarantee to Raj has given 1,50,000. आपने राज को कितने की गारंटी दी थी? 1,50,000. बट उसका शेयर कितना आ रहा है? ओनली 75,400. तो द रिमेनिंग अमाउंट जो उसे आपने गारंटी, रिमेनिंग अमाउंट आपका कितना आ गया? जब आपने गारंटी कितने की दी थी? 1,50,000. तो 1,50,000 में से इसका ये अमाउंट लेस कर दोगे तो 74,600 will be borne by the Molly and Bhola in their profit sharing ratio. Profit sharing ratio is equally 3:3. Okay, तो these 74,600, ठीक है, वो bear करेंगे, will be divide 3:3 in their ratio. It means 74,000 कितना आ जाएगा? 37,300 will be borne by Molly and same amount 37,300 will be borne by the Bhola. तो ये amount उनके profit में से आप minus कर दोगे. Here is टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू. अब मोली का कितना करंट अमाउंट था? 56,500. उसमें से लेस ट्रांसफर टू राज. राज को ट्रांसफर किया आपने 37,300. तो रिमेनिंग अमाउंट यू हैव टू राइट 19,250 एज इट इज. भोला का शेयर कितना था? इज 56,550. फिर आपने राज को दिया ट्रांसफर टू राज 37,300 बिकॉज दोनों का सेम है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:3:4. दैट्स वाई इट्स इक्वली बोन बाय द मोली एंड भोला. 19,250 एंड राज का अमाउंट कितना हो जाएगा आपका? 1,50,000. मिनिमम आपने उसको गारंटी दी थी. हियर इज राज. तो यहाँ लिख दोगे उसका अमाउंट कितना कैलकुलेट हुआ है प्रॉफिट का? 75,400. ऐड करोगे ट्रांसफर फ्रॉम मोली इट्स 37,000. द सेम अमाउंट 37,300 एंड द टोटल जो आपने उसको गारंटी दी थी 1,50,000. लास्ट यू हैव टू प्रिपेयर करंट अकाउंट. करंट अकाउंट सेम. दे आर द 3 पार्टनर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. उनका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा. दैट्स वाई IOC विल बी राइट इन क्रेडिट साइड 25,000, 40,000 एंड 20,000. By salary 4,000 in the account of Molly. Commission will be given to Bhola 30,000. You have to write credit side. And by profit and loss appropriations, it means the share of profit 19,250. अभी जो आपने कैलकुलेट किया here is 19,050 and राज का शेयर मिनिमम आपने गारंटी दिया है 1,50,000. The same you have to charge to drawing. Drawing आप कहाँ लिखोगे? Because उनकी capital will be decreased. That's why drawing and interest on drawing will be right on debit side. To drawing 40,000, Molly, Bhola 60 and Raj is 80,000. Same to IOD 1,800, 33 and 24. I already explained how you calculate. And the balance you have to calculate. Credit का total amount है 48,250 minus 40,000 plus 1,800. 41,800 will be deduct and the remaining amount 6,450 you have to write debit side. This is to balance CD. As it is, the total amount is 89,250 minus, ठीक है, 63,300. So remaining amount will be 25,950 and the same you have to calculate. So this is your current account.